inquisitiveness about the oneness that was being discussed by various sannyasis with me. Now, for example, you see, the differences come under various factors. For example, these differences can be mitigated or eradicated through oneness. This much I could understood. And the oneness and witness state, like Sakshi Bhav, this was very difficult. So what is Sakshi Bhav? Very, very difficult to understand. Why should I be Sakshi and not a very involved person? So there also we start exploring. What is the oneness then? What is the definition it can be? Can it be accurately defined? We are talking oneness. Can we give accurate definition? So further we started discussing and knowing about it. At earthly plane or the cosmic plane, the oneness, when I live in a place, my limitations are there. In earth there is limitation, and then the solar system and cosmos, everything limits you. In your definition, what can be the definition, proper definition? What is our relative position in the earth or solar system, or our Milky Way, or the Akash Ganga? You see, the earth, compared to earth, how small we are, compared to our solar system, further how small we are, then compared to our Akash Ganga, and then this Milky Way is a part of the entire universe. This is also very, very small. Then we must understand our position, and by doing this, we can establish that we are part of this entire universe, a very, very tiny existence. Let us talk in relation to the earth only. This our belongingness, real unity for the humanity will emerge from the understanding of the Chinmaya Swarup is the part of that infinite Brahma. Then comes that even though I am very small, but everything happens to me only. And therefore, this my existence to be related with something great, which is of infinite scale. As I have said, that though I am very small, but still I am linked with I am part of the very big, infinite, which presently let us call Brahma. Now, after this stage of the realization of this relative position, one's feeling of belongingness extends to all the humankind who are highest form of the Chetan Shakti. You see, there are living beings, lot of kinds of living beings, but the Chetan Shakti is manifested in a highest form in a human being. At this stage, human being is not only feels oneness with the other fellow human being, but to the entire living being. Because of his relative position, he now finds there is hardly any difference, very little difference. What difference he is exaggerating, that difference slightly fades away, goes away, those differences. Now comes the most beautiful experience of the humankind, the peace. Now, once this difference fades away from him, and he does not see what he was exaggerating, that difference goes, and then he start realizing the peace. Peace is only an outcome of the true realization of the oneness above the physical plane, in the plane of knowledge of divine existence. For example, this universe is about 4 billion years old. 400 crore, 400 koti bachor purano. This. And what is your life? 70 years, 80 years, 90 years. Our life is 90, 100 years maximum we live. Compared to 400 crore, this lifespan is very, very small. Many civilizations developed in this world, it is said that the average lifespan of the one civilization is only 20,000 years. It's cycle. Again one civilization comes, vanishes, another civilization comes, vanishes.
So many civilization has already passed over this earth. Therefore, your ego, your being proud, anger, your being king or rich has no relevance to the civilization you are living in. It is so monetary and so momentary and so temporary. This is so temporary. So हमको बहुत गर्व करने का कुछ नहीं है इस दुनिया में, इससे बहुत क्षणिक है सब कुछ. Then what shall we do after realization of the oneness and the essence of the peace? Live in good God consciousness and serve the humanity. Swami Vivekananda said, just I know 1 minute, Swami Vivekananda says that Siva Bhave Jiva Seva, this consciousness will lead you to the service of the humankind. And the greatest statement that he has given, the bold statement he has given, I say in Hindi, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी मनुष्य कहते हैं, उस प्रभु का सेवक हूँ. प्रभु उन्होंने कहा है मनुष्य को, God, he said, the human being, God, I am servant to that God which the ignorant people say human being. Nobody has ever given a bigger statement than this. This needs courage and fearlessness. Now I conclude, after all these things, whatever I could understand, I conclude this oneness, peace, courage and fearlessness will come from the service, from the Shravan, Manan and Chintan of Vedanta. मैं भगवान जी से उनके आशीर्वाद लेके मैंने 2 शब्द यहाँ पर रखने की कोशिश किया. अगर मेरी समझ में कोई त्रुटि हो तो मुझे एनलाइटन करने की कृपा करेंगे. थैंक यू. Thank you, Shri Ujjwal Kumar Banerjee. I would like to take this opportunity to offer my salutations at the lotus feet of Shri Bhagwan and Sangha Janani Shri Shri Guruma. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhu cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Moving on to our next program, we have book inaugurations. The first book to be inaugurated is Sambhavami in Assamese by Shambhu De, father of Premomoyi Ma of Amingao. Translated and sponsored by Shambhu Datta Sharma, Secretary of Panchatirtha Parichalana Committee. Next, Sri Bhagwan Uvacha in the English edition by Pramod Mahapatra of Kolkata, a devotee of Sri Bhagwan. And last but not the least, Vedanta Sadhana in Hindi by Ranjit Sikdar, one of the trustee and convener of IVS from Guwahati. I request all the guests to come to the stage. They will be assisted by Sri Pradeep Kumar Roy, the Vice President of the International Vedanta Society, and Shri Durga Patel will assist Sri Pradeep Kumar Roy. Now, the first book, Sambhavami in Assamese, to be inaugurated by Sri Shambhu De, who is the father of Premomoyi Ma of Guwahati. And this book is translated and sponsored by Shambhu Datta Sharma of Hajo, who is the secretary of Panchatirtha Parichalana Committee. So I request Sri Shambhu De to inaugurate Sambhavami. Sambhavami is the Assamese translation of Chand Mama in Bengali. It's the Assamese version of Chand Mama. Please give a big hand. They have worked relentlessly for translating and printing this book in Assamese. Now, I request
Sri Pramod Mahapatra of Kolkata, an ardent devotee of Bhagavan, to kindly inaugurate Bhagavan Uvacha, the English edition of the Bengali book Bhagavan Uvacha. This book is a compilation of the discourses on Vedanta given by Bhagavan. I request Sri Pramod Mahapatra from Kolkata to inaugurate Bhagavan Uvacha in English. And then I would request convener of International Vedanta Society and a trustee board member, Sri Ranjit Shikdar, to kindly inaugurate Vedanta Sadhana in Hindi. This book is the Hindi translation of Vedanta Sadhana in Bengali, which is a compilation of all the letters written by Srimad Swami Pavitrananda ji to his beloved disciple Sri Bhagavan. And on this very auspicious day of the birth anniversary of Srimad Swami Pavitrananda ji, we take this opportunity to inaugurate his book in Hindi. I thank you all. I thank Mr. Shambhude, Sri Shambhudatta Sharma, Sri Pramod Mahapatra and Sri Ranjit Shikdar. Thank you once again. In order to proceed on the path of spirituality, without renunciation, nothing can happen. We need renunciation from inside. I now request Swami Keshavanandaji Maharaj, the President of IVS, to present his speech. Please give a big round of applause for President Swami Keshavanandaji Maharaj. नमस्कार। उपस्थित काशीवासियों सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम गुरुदेव मेरा गुरु श्री श्री भगवान जी को मेरा साष्टांग संग जननी श्री श्री गुरु माता जी को मेरा प्रणाम। आज जिसकी जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मतलब वेदांता सोसाइटी जिस भूमि में आज खड़े हैं, जिसकी जन्मदिन को हम लोग मनाए जा रहे हैं, वह स्वामी पवित्रानंद जी। उसको बारे में आप लोग सुने हैं, बहुत सुनेंगे। अब सुबह देखे हैं हमारा भगवान जी उनको कितना श्रद्धा निवेदन किए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक वर्ल्ड जो है ये श्रद्धा के बिना कभी नहीं हो सकता है। तो इनको डेमोन्स्ट्रेशन सुबह हमको मिला है। देखिए, भगवान के साथ मेरा बहुत समय गुजर चुका। मेरा ये सौभाग्य था एक महान प्राण को नज़दीक से देखने का, समझने का कुछ प्रयास मिला। उसको ही कुछ घटनाएं जो मेरा दिमाग में, दिल में अभी बैठे है, तो मैं अभी इसको बारे में, इसको विषय थोड़ा चर्चा आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे ज्ञान के बारे में तो सब कुछ बोले हैं। काशी विद्वान के जगह है, विद्वान के स्थान है, स्वयं शिव जी यहाँ है, ये तो स्वाभाविक है। यह वेदांतो अजातवाद बहुत सारी चर्चा हो गया, बहुत सारी चर्चा हो गया और होता रहेगा। लेकिन इस कन्वेंशन की एक संदेश भी है, वो हम बाद में हम आप लोग को ये संदेश क्या वार्ता देना चाहते हैं वेदांता सोसाइटी, वो आपको हम बताएंगे। इसको पहले एक छोटी सी घटना जो ज्ञान के राज्य में जो
चढ़ते हैं, जो ज्ञान जैसे बनर्जी साहब ने बोल के गए, कैसे ज्ञान को प्राप्त होता है दिमाग से। लेकिन मेरा कहना है ये बुद्धि सा परा, ये बुद्धि में वो ज्ञान, आत्मा को ज्ञान प्रतिफलित रिफ्लेक्शन होता है, तभी उस ज्ञान को पता चलता है। इट कैनॉट बी परसिव्ड बाय आवर इंटेलेक्ट। आवर इंटेलेक्ट विल गिव यू द सिग्नल that you go beyond me, then only you can achieve that realization. That is why we are having so many scriptures, so many books. We try to interact in our own language, in our own feelings, in our own expression. तो जो भी हो, जो मैंने कहना चाहता है, जो एक जिंदगी को गौर से देखिए, क्योंकि लाइफ इम्पर्ट्स लाइफ। ये नॉलेज, ये वेदांत का जो ज्ञान है, जिसको हम लोग ज्ञान समझते हैं, वो बाहर से कभी हमको अंदर में नहीं घुसता है। इट गोज फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ये गुरु के हृदय का वो ज्ञान का अग्नि, जो अग्नि फायर जो है, वो हमारा अंदर को छिपा हुआ अज्ञान को नष्ट करने के बाद ज्ञान का प्रकाश होता है। इसीलिए गुरु की महत्व इस आध्यात्मिक जगत में सबसे अहम है। तो एक दिन के बात है, उस समय अरुणाचल के नाम आप लोग सुने होंगे। ये चाइनीज बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ही डिस्टर्ब इलाका है। वहाँ में एक भक्त था भगवान जी को, बहुत पुराना, अभी भी है। तो उनको पास भगवान जाना चाहते थे। असम में भगवान टूर में गए हैं, सफ़र में गए हैं। तो उस समय इतना काफ़ी भीड़ नहीं था, हमारा पास कोई साधन नहीं था। मामूली से एक ट्रेन से भगवान को हम लेते चले। तो भगवान को तो अभी आप लोग को पता चला, सभी को पता चला, क्योंकि भगवान को भीतर में जो शक्ति के प्रकाश हुआ है, दैट इज गॉड। उस समय किसी को पता नहीं था। तो उस समय ट्रेन में सफ़र करते करते एक समय अचानक ये ट्रेन खड़ा हो गया। सब लोग मतलब बेचैन थे, क्या हो रहा है भाई, आगे क्या कुछ तो हो रहा है, बवाल होता रहता है वहाँ। दैट इज़ ए डिस्टर्ब्ड जोन एज वी नो। तो जो भी हो, तो हम भी ट्रेन से उतरे हैं। उतरे खबर लेने गए हैं स्टेशन मास्टर से। तो मेरा स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया, देखो ये अभी यहाँ से जाने का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि सामने रेल लाइन टूटे हुए है, वहाँ में बम ब्लास्ट हो गए। हम अचानक आए हैं भगवान को खबर देने के लिए, जब भगवान जी चलिए, यह हमसे ये आगे का यात्रा नहीं संभव नहीं है। तो आके देखे हैं भगवान लोअर बर्थ में सोए हैं समाधिस्थ होके। हम असहाय था उस समय, अकेला था। हमारे साथियों सबको हम कोशिश किया वहाँ से जुड़ने के लिए, लेकिन वो एक रिमोट प्लेस है जहाँ भगवान जी समाधिस्थ होके पड़े हैं। सुपर कॉन्शियस स्टेट जिसको बारे में हम लोग बताते हैं, उनको जगत के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है। आगे कोई आप बवाल हो रहा है, क्या होगा, हम भगवान जी को संभालेंगे ना हम वहाँ से तैयार होएंगे वहाँ से जाने के लिए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन भगवान निर्विकार है। मतलब जो बाहर का ज्ञान है, बाहर का जो प्रॉब्लम है, जिसको बारे में हम लोग बहुत कुछ बताते हैं, अंतर्याज्य में जो प्रवेश किए है आत्मा में, ये सब कुछ नहीं है। वो समाधि स्टेट में भगवान शांत था, उनको कुछ पता ही नहीं चला, उनको खबर ही नहीं हुआ आगे इतना डेंजर है। जो भी हो, किसी तरह उनको संभाल के वहाँ से गाड़ी लेके किसी को, सज्जनों को घर पे हम लोग ठहरे थे उस दिन। नेक्स्ट दिन बाई रोड, वहाँ से ट्रेन भी नहीं चलते हैं, बाई रोड इतना अंधार में, बाद में रात में डेड नाइट में जाके हम लोग पहुँचे हैं। तो ये इससे दो बात साबित होता है। एक बात, भगवान अपना भक्त के लिए उनको जीवन का भी बलिदान दे सकते हैं। ये हम लोग को बहुत बार देखे हैं हम लोग, ये उनको प्यार है। और काशी में ये वेदांत का चर्चा होगा, ये तो स्वाभाविक है। और वेदांत सोसाइटी का प्रतिष्ठा इसीलिए हुआ था क्योंकि ये वेदांत के वाणी जो है, ये केवल वाणी नहीं है। दिस इज़ नॉट ओनली ए फिलोसॉफी, इट्स अ लाइफ। अगर किसी को लाइफ में ये वेदांत की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ, तो ये बातों की बात होगा, ये पंडितों की बात होगा,
ये अनुभव की मतलब एरिना में कभी घुस नहीं पाएंगे। तो जो भी हो, अभी वेदांत सोसाइटी जो वार्ता देना चाहते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ से गंगा पूर्व की ओर चलते हैं, शिव जी को छूकर पूर्व की ओर चलते हैं, भागीरथी पूर्व की ओर चले, कलकत्ता होके बंगोप सागर पे मिले हैं। तो हम लोग भी पूरब से आए हैं, हम लोग भी वेदांतो सोसाइटी का प्रतिष्ठाता श्री श्री भगवान जी को जितना भी उपलब्धि आज जो भगवान बने हैं, आज उनको ट्रांसफॉर्मेशन गुरु जी से जो भगवान में हुए हैं, वो सब पूरब में था, आसाम में था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है वो हमें कोई उनको पहचान नहीं पाया और हम लोग भी कर नहीं सके। तो काशी वासियों, शिव नगरी को वासियों, आपको, आप सब लोग को हम बधाई देना चाहते हैं। आप लोग ठीक ठीक निर्णय किए हैं और इस ज्ञान को, इस प्रेम को आप लोग मान्यता दिए हैं। तो धन्य हुआ हमारा ये 25 साल का मतलब रजत जयंती समारोह। और वेदांतो सोसाइटी पूरब से क्या मैसेज लेके यहाँ आया, ये प्रेम का मैसेज है।